بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, as you remember that yesterday we finished unit number 3, the story Anansi and 5. And today we are going to start the exercise of the same story, and we have to answer the questions given in part A of the exercise, and they are so many. So let's start the work without any delay. The first question is, what was the witch's name and why didn't she like it? What was the witch's name and why didn't she like it? Okay, what was the name of the witch? Very good. It was Five. Five. And why didn't she like it? Very good. Because everyone made fun of her. Everyone made fun of her name. Everyone made fun of her name. Or we can say everyone laughed at her name. Everyone laughed at her name. हर कोई उसके नाम पे हंसता था. हर कोई उसके नाम पे हंसता था. What was the witch's name and why didn't she like it? The witch's name was Five and she didn't like it because everyone laughed at her name. Everyone laughed at her name. Now let me show you how you are going to write this in your neat notebook. Write a unit number and name and then write first question. Answer the following question. This is part A. What was the witch's name and why didn't she like it? The witch's name was Five. अच्छा, ये 5 जो है आपने कैपिटल F से लिखना है. क्वेश्चन में was है तो आंसर में was होना चाहिए. The witch's name was Five. She didn't like it because everyone laughed at it. Everyone laughed at it. Laughed at का मतलब है made fun of something. ठीक है, किसी का मजाक उड़ाने को make fun of कहते हैं या laugh at कहते हैं. ठीक है, you should never laugh at someone. You should never laugh at someone because it can badly hurt them. ठीक है. The second question is, what was the witch doing in her garden? What was the witch doing in her garden? What was the witch doing in her garden? What was she doing? She was cooking magic. She was cooking magic in a big cooking pot. The witch was cooking magic in a big cooking pot. What was the witch doing in her garden? What was the witch doing in her garden? The witch was cooking magic in a big cooking pot. The witch was cooking magic in a big cooking pot. What was the witch doing in her garden? The witch was cooking magic in a big cooking pot. क्वेश्चन में was है तो आंसर में भी was होगा. जो वर्ब है वो ing फॉर्म में है तो आंसर में भी वर्ब ing फॉर्म में ही होगा. डू नहीं है, डूइंग है. व्हाट वाज द विच डूइंग है तो आंसर में कुकिंग है. ठीक है, व्हाट डिड द विच डू होता तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाते और उसमें ing फॉर्म ना होता. ठीक है, सो यहाँ पर डू नहीं है, डूइंग है तो आंसर भी कुकिंग है. ठीक है, ing हमें क्वेश्चन से मिला. The next question is, why was Anansi pleased? Why was Anansi pleased? Why was he happy? Why was Anansi happy? Anansi was pleased because he thought that he might make some money by using the word five.
5 का वर्ड जैसे ही वो यूज़ करेगा उससे उसको पैसा भी मिलेगा और फूड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एनांसी वॉज प्लीज्ड टू थिंक, एनांसी ये सोच के खुश हुआ दैट ही कुड मेक मनी बाय यूजिंग द वर्ड 5, कि 5 का वर्ड यूज़ करके वो पैसा कमा सकता है। मेक मनी मीन्स पैसा कमाना। Why was Anansi pleased? Anansi was pleased to think that he could make money by using the word 5. He could make money by using the word 5. The next question is, what was the first animal that Anansi tricked? What was the first animal that Anansi tricked? What was the first animal that Anansi tricked? Very good. Mrs. Rabbit. Mrs. Rabbit. अच्छा, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है. इट इज़ द ईजीएस्ट question of this exercise because you just have to answer what and was the first animal the Anansi tricked is the part of your answer too. ठीक है. what का आंसर आप लिखोगे Mrs. Rabbit was the first animal that Anansi tricked. Mrs. Rabbit was the first animal that Anansi tricked. Mrs. Rabbit was the first animal that Anansi tricked. The next question is, which animals were not fooled by Anansi? Which animals, question E, which animals were not fooled by Anansi? Which animals were not fooled by Anansi? Miss Frog and Mrs. Shrew. मिस फ्रॉग. अच्छा, मिस फ्रॉग जब आप लिखोगे तो मिस का एम भी कैपिटल होगा, फ्रॉग का एफ भी कैपिटल होगा, मिसेस का एम भी कैपिटल होगा और श्रू का एस भी कैपिटल होगा क्योंकि ये नेम्स हैं. ठीक है. जहाँ भी अनांसी का नेम लिखना है वो भी कैपिटल ए से लिखोगे. जिस किसी का भी प्रॉपर नेम यहाँ मौजूद है तो उसको हम प्रॉपर नेम के लिहाज से उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ठीक है. और चाहे उसके साथ मिस या मिसेस लिखा है वो भी साथ में कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे. ठीक है. सो विच एनिमल्स वर नॉट फूल्ड बाय एनांसी? मिस फ्रॉग एंड मिसेस श्रू वर नॉट फूल्ड बाय एनांसी. विच एनिमल्स? मिस फ्रॉग एंड मिसेस श्रू वर नॉट फूल्ड बाय एनांसी. Were not fooled by Anansi. Okay, the next question is a little bit tricky and it is, what things could you buy in the market? What things could you buy in the market? What things could you buy in the market? अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को ट्रिकी क्यों कहा पहले मैं ये बता दूं. क्योंकि इस क्वेश्चन को जब बच्चे पढ़ते हैं कि व्हाट कुड यू बाय इन द मार्केट, तो उनके जहन में ये है कि हमसे पूछा जा रहा है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जनरल क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमें मार्केट में क्या क्या मिलता है और हम मार्केट से क्या क्या ख़रीद सकते हैं. ऐसा सोचने की दो रीज़न होती हैं. एक तो ये कि क्वेश्चन में यू लिखा हुआ है तो उस वजह से वो समझते हैं ये हमसे पूछा गया. दूसरी रीज़न ये है कि सोशल स्टडीज़ में जो इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको मतलब जो बार्गेन वगैरह का जो चैप्टर है वो सिखाया जाता है. उसको बार्टर सिस्टम वगैरह जो या मॉनेटरी जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़े होते हैं उनकी वजह से वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया. ठीक है. तो व्हाट थिंग्स कुड यू बाय इन द मार्केट, इसको आपने अपनी तरफ से आंसर नहीं करना. ये क्वेश्चन एनांसी एंड 5 से लिया गया है तो हम एनांसी एंड 5 की जो मार्केट थी वहाँ जो कुछ मिलता था वो आंसर में लिखेंगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपकी मार्केट के बारे में नहीं पूछ रहे,
ये एनएनसी एंड 5 में जो मार्केट है उससे रिलेटेड आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपने वो देना है जो स्टोरी में है। What things could you buy in the market? What things could you buy in the market? We could buy yams, beets, pulses, and grains in the market. We could buy yams, beets, pulses, and grains in the market. What things could you buy in the market? We could buy yams, beets, pulses, and grain in the market. Okay, the next question is, why was Mrs. Shrew going to the market and what was she going to do there? Why was Mrs. Shrew going to the market and what was she going to do there? मिसेस श्रू मार्केट क्यों जा रही थी और वहाँ जाके उन्होंने क्या करना था, ठीक है। सो वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन। क्या आंसर था इसका? आप इसका आंसर सोचें और मुझे बताएं। तब तक आप सोचें और तब तक मैं अपना आंसर लिखती हूँ, देखती हूँ आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है। Why was Mrs. Shrew going to the market and what was she going to do there? The answer is Mrs. Shrew was going to sell pies in the market and to buy food for her family. To sell pies in the market and to buy food for her family. Mrs. Shrew was going to sell pies in the market and to buy food for her family. Part H is, why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Okay, Anansi को क्यों गुस्सा आ रहा था मिसेस श्रू पे? Because she was not saying the word 5. Because she was not saying 5. She was not saying 5. Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Anansi got angry with Mrs. Shrew because she was not saying 5. Anansi got angry with Mrs. Shrew because she was not saying 5. क्वेश्चन में डिड है जिसकी वजह से मैंने गेट को गॉट लिख दिया है। तो एनांसी गॉट एंग्री विद मिसेस श्रू बिकॉज शी वॉज नॉट सेइंग 5. Okay, the last question is, how many characters are there in the story you have just read? Okay, sorry. How many characters are there in the story you have just read? Make a list. Make a list. How many characters are there in the story? Make a list. Make a list. अच्छा, इसकी जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हम ऐसा करते हैं कि तरतीब से बनाते हैं। स्टोरी में सबसे पहले किसका नाम बताया गया हमें? एनांसी। सेकेंड 5। फिर जो पहली जो शिकार थी वो कौन थी? मिसेस रैबिट, मिस्टर डक, मिस फ्रॉग एंड मिसेस श्रू। टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें। एनांसी, 5, रैबिट, डक, फ्रॉग एंड श्रू। 6 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम अभी हम एज अ लिस्ट लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके हम लिखेंगे क्योंकि लिस्ट ऐसे ही बनती है, ठीक है। एंड देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। पहले आपसे पूछा गया हाउ मैनी कैरेक्टर्स, तो पहले आपने हाउ मैनी का आंसर देना था। तो देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। नंबर 1 एनांसी, 5 मिसेस रैबिट, मिस्टर डक, मिस फ्रॉग, मिसेस श्रू।
Anansi, 5. Mrs. Rabbit, Mr. Duck, Miss Frog, Mrs. Shrew. एक और क्वेश्चन जो इन्होंने यहाँ पर दिया है वो उस पार्ट से थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट क्लूज आर देयर इन द स्टोरी विच टेल अस दैट एनांसी वाज नॉट अ नाइस स्पाइडर। What clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? Anansi was not a nice spider. अच्छा, क्या क्या बातें थी जिससे हमें पता चला? नंबर 1 ये कि अपने फ़ायदे के लिए बाकी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहा था. He was harming others for his own good. He was harming others for his own good. नंबर 1 बात ये थी. दूसरी बात ये कि he was not saving anything for his family. He was not saving anything for his family. Third thing, he was too much greedy. बहुत लालची था, मतलब जितना उसको खाना चाहिए उससे भी ज़्यादा खाने की सोच रहा था. और फिर जब वो 2 लोगों को लूट चुका उसके बाद भी उसे मज़ीद लोगों को शिकार बनाने का वो सोच रहा था कि मैं और भी लोगों से चीज़ें खाऊंगा. ठीक है. देयर वर 3 क्लूज इन द स्टोरी विच टोल्ड अस दैट एनांसी वॉज नॉट अ नाइस स्पाइडर. Okay, what clues are there in the story which tell us that Anansi was not a nice spider? Anansi was not a nice spider because he harmed others for his own good. He harmed others for his own good. He did not save anything for his family. And thirdly, third bad thing about him was he was very greedy. He was very greedy. This is all for today. I hope you learned and enjoyed. ये जो आज रिटर्न काम हमने किया यही आपका होमवर्क है. आई होप यू विल डू द होमवर्क. विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.